गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक 4 ही लोग ज्वाइन किए हैं, रुको सबको ज्वाइन करने दो। नेटवर्क बहुत स्लो है आज, बहुत एक्टिव कर रहा है। ओके ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे। हम लोग के नियरेस्ट नेबर जो एल्गोरिथम है उसके बारे में जाने थे। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर क्या है उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेंगे। तो दो चीज हम लोग सीखे थे इसके बारे में। वी लर्न अबाउट टू थिंग्स। वन इज द के नियरेस्ट नेबर कैन बी यूज्ड फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम because it can predict some continuous value based on its training set, as well as it can also predict discrete values for the classification. So in both ways it could be used, the KNN could be used where the value of n should be decided by the programmer. Okay, so here we have to follow trial and error method. So whenever we do the programming, we will see that how KNN works. Basically, we have to choose the value of n. That means how many nearest neighbor we are going to consider to predict the respective required value. How many neighbors we are going to consider, that we have to decide. तो KNN में हम लोग नियरेस्ट नेबर का जैसे इनका वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड एक के बाद एक इंक्रीज करके देखते हैं कि उसका एक्यूरेसी वैल्यू कैसे आ रहा है। तो हम लोग जो इवोल्यूशन मैट्रिक्स है उसके बारे में भी जाने हैं। तो क्या क्या मैट्रिसेस हम लोग देखे थे, हम लोग रिकॉल प्रिसिशन एक्यूरेसी ऐसा देखे थे। तो अभी आई थिंक यू आर फैमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी दैट इज एक्यूरेसी. So basically, our parameter in case of KNN, our parameter is one parameter is nearest neighbor, number of nearest neighbor है. उसको सेट करके हम लोग चेक करते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन एक्यूरेसी कितना अच्छा आ रहा है. Based on that, we can modify the value of n. Right. So this is KNN, or KNN could be used for regression as well as classification. And हम लोग देखते हैं कि उसका क्या क्या एग्जाम्पल अवेलेबल है. एक्चुअली मैं जो मटेरियल बनाई थी उसमें एक एग्जाम्पल भी इंक्लूड किए थे. तो देखते हैं इसमें क्या है. Starting math, then comes data science, in नहीं रहा कि I don't know, my system has become very slow from yesterday. Why it is happening? Okay. तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि KNN का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. तो आप लोग इधर वाला एग्जांपल देख लो. यहाँ पे क्या बोला गया है कि they have set the value k equals to 3. एक्चुअली लास्ट क्लास में यही वाला हम लोग शायद डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम लोगों का ये मीटिंग एंड हो गया. तो जो भी हो, तो यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन किए थे k equals to 3. आफ्टर दैट we have to predict the class of our test set. तो टेस्ट सेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, ट्रेनिंग सेट के बारे में बोला गया है. तो टेस्ट सेट के लिए एक एक डेटा पॉइंट अगर आएगा या कोई सैंपल आएगा तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं आफ्टर डूइंग द ट्रेनिंग एंड आफ्टर सेटलिंग अप द मॉडल. राइट. तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, फीचर का बारे में तो हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पे ये दो फीचर अवेलेबल है. एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है कि
कोई भी पेपर अवेलेबल है, उस पेपर का ड्यूरेबिलिटी कितना है उसको प्रेडिक्ट करना है। वो पेपर कैसा है वो प्रेडिक्ट करना है एज अ क्लास, that is whether it is a good paper or a bad paper. So you can see there are binary classes, one is good and another is bad, so we can classify it as a binary, we can rename bad by 0 and good by 1. Okay, so binary classification is our target. और यहाँ पे फीचर्स क्या है, तो उस फीचर्स में बोला गया है एसिड ड्यूरेबिलिटी, दैट मींस एसिड गिरने से वो पेपर टिश्यू कितना मतलब रहता है या नहीं रहता, दैट इज वन फीचर, इट इज ड्यूरेबिलिटी, एंड समहाउ दे हैव मेजर्ड द ड्यूरेबिलिटी एंड गिवन सम वैल्यूज। तो फर्स्ट यहाँ पे कितना एग्जांपल दिया हुआ है, 4 ऐसे पेपर का एग्जांपल दिया हुआ है, so we will say that these are the samples, or we can say the instances, इसको इंस्टेंस भी बोला जाता है या सैंपल भी बोला जाता है। तो 4 ऐसा हम लोग को सैंपल मिला है, सो ये 4 सैंपल मिला के हम लोगों का ट्रेनिंग सेट कंसिस्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, फॉर कैन यू सी द स्क्रीन, हेलो, कैन यू सी द स्क्रीन, इज इट विजिबल? Okay. If you face any problem, then please let me know, because I can see that there is a network issue. So sometimes I think problem may occur. Okay. So there are another feature, that is the strength. Okay, strength का भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो दिस इज योर एसिड ड्यूरेबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड ड्यूरेबिलिटी फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट फीचर एंड द सेकंड कॉलम इज रिप्रेजेंटेड फॉर द सेकंड फीचर। तो ये सारा मेरा फीचर हो गया, 4 सैंपल है मेरे पास, और एक सैंपल का क्लास लेवल हम लोगों को पता है, one is bad and other is good. So we have 2 positive class and 2 negative class. So we can consider this good class as a positive class and bad class as a negative class. ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के वैल्यू से हम लोग क्यों देख रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ट्रू पॉजिटिव वैल्यू एंड ट्रू नेगेटिव वैल्यू आफ्टर क्लासिफिकेशन, and then only we can calculate the accuracy. So based on the class level, what we have to do is we have to relate the calculation of accuracy with the given model, or what the model we are going to construct. We have to relate that thing with this calculation matrices. Okay. So problem के बारे में हम लोग जान गए हैं, अब उसका solution बारे में देखते हैं। So now the factory produce a new paper tissue that pass laboratory test with x equals to x1 equals to 3 and x2 equals to 7 without another expensive hardware. So can we guess the classification of the new tissue? तो यहाँ पे बोला गया है, यही मेरा टेस्टिंग सेट है, तो टेस्टिंग सेट में एक ही सैंपल दिया गया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले वाला 4 सैंपल से हम मॉडल को ट्रेनिंग करवाएंगे, और यहाँ पे x1 equals to 3 और x2 equals to 7, मतलब फर्स्ट फीचर का वैल्यू कोई एक सैंपल का सपोज 3 है और सेकेंड फीचर का वैल्यू कोई एक सैंपल का 7 है, तो उसको लेके कैसे हम लोग उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि whether that is good or bad. So you can see based on this program we can conclude that this is a classification problem, this is not a regression problem. Why it is a classification problem? Because to binary value we are going to predict either it will predict 0 or it will predict 0, so predict 1. So this is a binary classification problem. So in this way you have multiple classification problem also, you can find the multiplication multiple classification problem. So this is our binary. तो यहाँ पे पैरामीटर पहले हम लोगों को डिसाइड करना होता है, तो फिलहाल ये लोग k का वैल्यू ले लिया 3, मतलब नियरेस्ट नेबर में k का वैल्यू 3, so it will consider 3 nearest neighbor for calculation of or the prediction of new coming sample. तो
वैल्यू 3 ले लेने से हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा गिवन डेटा पॉइंट है टेस्टिंग सेट के लिए, जैसे यहाँ पे x1 का वैल्यू हो गया 3 और x2 का वैल्यू हो गया 7, तो 3,7 से हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेट में सारे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे एंड द डिस्टेंस will be here we are considering Euclidean distance. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जितना डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा, सपोज ट्रेनिंग सेट में मेरा 9 सैंपल है या n नंबर ऑफ सैंपल है, तो मेरा एक ट्रेनिंग सेट में दिया हुआ है एक सैंपल से उस n नंबर ऑफ सैंपल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा, n नंबर ऑफ डिस्टेंस मिलेगा. देन वी विल sort this n number of distances in decreasing order. So after that means the first value we will be get the that is the highest distance, the higher value, or the reverse thing you also could do, that is you can sort these distances from smaller to higher. That means in ascending order. After sorting in ascending order, you will pick first three distances. Because this nearest neighbor का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 3, तो ये पहला 3 डिस्टेंस को हम लोग को उठाना है. पहला 3 डिस्टेंस को उठा के हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा क्लास का ऑकरेंस ज्यादा है, गुड का ऑकरेंस ज्यादा है या बैड का ऑकरेंस ज्यादा है. तो 3 में से किसी एक को बड़ा होना पड़ेगा या ज्यादा होना पड़ेगा, राइट. तो 3 में से सपोज गुड क्लास ज्यादा है, मतलब 2 गुड क्लास आपको मिल रहा है उस 3 में से और एक बैड क्लास मिल रहा है. सो बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी वैल्यू we will predict that for our given sample which is in our test set, the corresponding prediction value of that will be the good, because the occurrence of our distance or occurrence of the in our first first k nearest neighbor or first 3 nearest neighbor are good. That's why the corresponding testing set, the prediction value will be good. So in this way you have to know. Example में देख लेते हैं कि कैसे ये कर रहा है. तो मेरा given sample value है 3. So if this is our one dimension and this is our another dimension, so we will do what? We will find the Euclidean distance from 7,7 to 3,7. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग को क्या पता है कि x1 minus x2 its whole square plus y1 minus y2 its whole square and root over of this value. तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया है लेकिन रूट किया है, तो रूट करने से रूट ओवर का जरूरत यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए. लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को ऑर्डर चाहिए या किस ऑर्डर में इसको मैं सॉर्ट करती हूँ उसके लिए वैल्यू चाहिए. तो इफ यू डोंट do this root over thing, then also this thing will work. So they have not done. यहाँ पे आपका root over नहीं लिया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो 7 minus 3 मतलब 7 minus 3. This 7 minus this 3 is 7 minus 3 whole square plus यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 minus 7 is whole square. It is giving you 16. डेटा पॉइंट का वैल्यू क्या है 7 और यहाँ पे आपका 3,7. तो 7,4 से 3,7 का डिस्टेंस -3 square plus 4 minus 7 is whole square. It is 25. नेक्स्ट डेटा पॉइंट आपका आ रहा है 3,4 और यहाँ पे आपका वैल्यू है 3,7. So your distance will be 3,3 its whole square plus 4 minus 7 its whole square. तो पहले आपको क्या मिला 3 minus 3 its whole square plus 4 minus 7 its whole square. तो जैसे हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं so negative value will not matter here. So 4,7 का वैल्यू आपका आता है -3, but whenever you are doing square it will give you 9. So no issues. Okay, so कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Then 1,4 नेक्स्ट जो डेटा पॉइंट है ये इसका वैल्यू है 1,4. So you again will calculate the distance, that is 1 minus 3 its whole square plus 4 minus 7 its whole square, that is 30.
तो ऐसा करके आपका सारा डिस्टेंस वैल्यू मिल गया है इस पॉइंट से, जिसके लिए हमें प्रेडिक्ट करना है। उसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। कैसे सॉर्ट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। पहले फर्स्ट रैंक मुझे मिलेगा, इसके लिए 9 का जो डिस्टेंस है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, राइट। तो इसका रैंक हो जाएगा 1, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद एक मिनट, 9 का रैंक सबसे छोटा, दिस इज द लिस्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई द रैंक विल बी 1। उसके बाद नेक्स्ट छोटा वैल्यू है 9 के बाद नेक्स्ट छोटा वैल्यू है 13, सो इसलिए 13 का रैंक हो गया आपका 2। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू है 16, इसलिए इसका रैंक है 3। और उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है डिस्टेंस, दैट इज 25, दैट्स व्हाई द रैंक ऑफ दिस 7,4 पॉइंट, रैंक ऑफ दिस 7,4 पॉइंट इज 4। ठीक है, तो कौन सा सैंपल हम लोग अभी उठाएंगे मेजॉरिटी क्लासिफिकेशन वैल्यू या मेजॉरिटी क्लास चूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मेजॉरिटी क्लास चूज करने के लिए, जैसे कि मेरा k का वैल्यू 3 लिया गया है, तो वी विल पिक 3 सैंपल, ओके, विथ द लोएस्ट लोअर रैंक। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक आ गया ये, तो इस सैंपल को उठाएंगे, 3,4 सैंपल को उठाएंगे। नेक्स्ट हम उठाएंगे जिसका रैंक 2 है, तो मतलब 1,4 सैंपल को उठाएंगे। जिसका रैंक 3 है, मतलब 7,7, इस सैंपल को हम लोग उठाएंगे जिसका रैंक 3 है। तो 1, 2, 3 वाला रैंक जिसका है उसको हम लोग उठाएं और देखें कि उसका क्लासिफिकेशन का वैल्यू क्या है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, इज इट इंक्लूड इन 3 नियरेस्ट नेबर। 3 नियरेस्ट नेबर में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, तो फर्स्ट सैंपल मेरा इंक्लूड हो रहा है, सेकंड वाला नहीं इंक्लूड हो रहा है, थर्ड इंक्लूड हो रहा है और फोर्थ इंक्लूड हो रहा है। फाइन, तो ये ऐसे करके मैं नियरेस्ट नेबर कौन है उसको निकाल लिया। अब नियरेस्ट नेबर का क्लास लेवल क्या है देखते हैं। तो नियरेस्ट नेबर का मतलब इसका क्लास लेवल क्या है, कैटेगरी ऑफ नियरेस्ट नेबर, हियर इट इज बैड। इसके लिए क्या है, इसका क्लास लेवल गुड है, इसके लिए भी गुड है। सो मैक्सिमम occurrence of the class is good. तो there are 2 good class, 1 bad class. So we will predict of the given class of the given data point which is in the testing set based on its nearest neighbors majority classes. ठीक है, तो nearest neighbor का majority class है good, that's why the prediction value will be our prediction value of the query instance will be good category. ठीक है, तो x1 यहाँ पे वही बोला गया है कि with x1 equals to 3, you can see with x1 equals to 3 and x2 equals to 7, it includes good category. तो ये आपका कैटेगरिकल मेजर हो गया। अब आपका रिग्रेशन वैल्यू आता है, अगर जैसे कि मैं हाइट से वेट प्रेडिक्ट करने का, या हाइट उसके साथ एज, ये दो अगर फीचर रहता, हाइट और एज से हम लोग अगर किसी का वेट प्रेडिक्ट करते, तो दैट इज will be that should be considered as our regression problem, right? Because we are going to predict the continuous value. So to predict the continuous value, what we will do, we will average the target value of the nearest neighbors. ठीक है, एवरेज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमें क्या मिला है, यहाँ पे बैड गुड ऐसा कुछ मिला है क्लास लेवल के हिसाब से। रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए हम लोग यहाँ पे गुड बैड ऐसा नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, कुछ वैल्यू लिखा रहेगा। ठीक है, तो उस वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट नेबर में जो जो डेटा पॉइंट मुझे मिलेगा, ठीक है, उस सारे डेटा पॉइंट का जो टारगेट वैल्यू है, या मैं बोल सकती हूँ कि उसका प्रेडिक्शन वैल्यू है, वो सारे प्रेडिक्शन वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज बना लेंगे। और एवरेज निकालने के बाद वो ही वैल्यू क्या होगा कि जो मेरा टेस्टिंग सेट में गिवन डेटा पॉइंट का प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे थे, उसी का टारगेट वैल्यू होगा वो एवरेज वैल्यू, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट देन I can explain using a diagram, or I can use the paint. And if you have no problem, then I will move to the next topic. ठीक है, अब ये जो k का वैल्यू क्या चूज करना है, या k का
वैल्यू कैसे वेरिएट कर रहा है, वेरिएशन ऐसे मतलब कैसे ला सकते हैं, वेरिएशन लाने से एक्यूरेसी वैल्यू में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, वो हम लोग बिना कोड किए नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों का असाइन लैब क्लासेस है, तो लैब में इसका हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे, तो दैट विल बी बेटर। तो उसका एप्लीकेशन के नियरेस्ट नेबर का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे लैब में, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री इज a machine learning algorithm which is fully classification algorithm, ठीक है। डिसीजन ट्री सिर्फ क्लासिफिकेशन करता है, but KNN is also useful for classification problem as well as regression problem. So okay, so I guess you have no problem regarding this KNN, so I'm closing this KNN note, okay? And this note has been provided to you earlier. Now decision tree, yes. तो आपको थोड़ा ओवरव्यू वगैरह देखेंगे हम लोग, और पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ओके। तो तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि decision tree analysis is a general predictive model tool that has applications spanning a number of different areas. In general, decision tree are constructed via algorithmic approach that identifies where to split data set based on different conditions. It is one of the most widely used and practical methods for supervised learning. Decision tree are non-parametric supervised learning method used for both classification and regression tasks. Okay, so it can do regression task also. So okay, I have to see how it does regression. Okay, okay, that's fine. So we'll see then how the regression is done. Actually, as far as I knew about it was the classification. Okay, no issues. We will see. Then the goal is to create the model that predicts the value of target variable by learning simple decision tool. Okay, so there are so many terminologies. So one by one we will go through it and we'll see. तो यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज का। इंस्टेंसेस रेफर टू द वेक्टर फीचर एट्रीब्यूट्स दैट डिपेंड इनपुट स्पेस। तो इंस्टेंसेस मतलब क्या है, यहाँ पे सैंपल है। जैसे कि पहले वाला एग्जांपल में हम लोग देखे हैं कि जो मेरा सैंपल था, 4 सैंपल था, जिसमें 4 ऐसा पेपर हम लोग को दिया गया था जिसको हम लोग ट्रेनिंग सेट के हिसाब से कंसीडर किए थे, और उससे फार्दर प्रेडिक्शन मॉडल क्रिएट किए थे, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड इंस्टेंसेस। तो बेसिकली आपका जो गिवन डेटा सेट रहेगा उसका देखना रो में जो रो का एंट्रीज है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंसेस, ओके। Then attribute quantity describing an instances. Quantity describing an instance. So जैसे कोई एक पर्सन का सपोज 10% का डेटा आपका दिया हुआ है, तो वो हर एक पर्सन को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंसेस, और उसका जो फीचर या जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सारा हो गया आपका फीचर या एट्रीब्यूट। तो पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट द फंक्शन दैट मैप्स इनटू आउटपुट। सो जो इनपुट तो आउटपुट में जो मैपिंग होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। व्हाटएवर टारगेट कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द फीचर वैल्यूज, द फंक्शन दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एक्चुअल आंसर, ठीक है। हाइपोथेसिस क्लास सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल फंक्शंस, ओके। सैंपल इज सेट ऑफ इनपुट with label which is correct output। तो वही बोला गया है कि आउटपुट के साथ उसका जो करंट इनपुट लेवल है, मतलब सारे फीचर वैल्यू के साथ उसका जो प्रेडिक्शन वैल्यू है, जैसे आपका हाइट हो गया x और एज हो गया सपोज y, then suppose you are predicting the weight that is z, then the total set this x y z is called a sample।
ओके, कैंडिडेट कॉन्सेप्ट व्हाटएवर दिस आर नॉट रिक्वायर्ड। टेस्टिंग सेट हम लोग को पता है कि टेस्टिंग सेट मतलब जिसका प्रेडिक्शन लेवल हम लोग को पता नहीं होता है। दिस आर सिमिलर टू द ट्रेनिंग सेट के साथ इसका सिमिलर होता है, क्योंकि टेस्टिंग सेट में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट रहता है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट रहता है, सेम एट्रीब्यूट्स रहता है, बस एट्रीब्यूट का वैल्यू डिफरेंट होता है, बट नेम्स or the entries or the list of the attributes are same for testing set, and we have to predict or determine its performance. The performance may be the prediction value or maybe the prediction class. Okay, decision tree में यहाँ पे कुछ बोला गया है। Decision tree is a tree like graph with nodes representing the place where we pick an attribute and ask a question. तो हर एक एट्रीब्यूट से हम लोग कुछ यहाँ पे डिसीजन मेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट के एक साथ नहीं ले लेते हैं, एक एक एट्रीब्यूट को उठाते हैं, फिर उससे कुछ डिसीजन लेते हैं। तो उससे जो डिसीजन या यस नो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, उससे फर्दर वहाँ पे दूसरा एक एट्रीब्यूट पिक करते हैं, तो फर्दर उसको क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अभी ये आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, whenever we'll see the example then the thing will be clear. तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Decision tree classify the example by sorting them down the tree from the root to some leaf node, okay, with the leaf node providing the classification of to the example. Each node in the tree acts as a test case for some attribute, and each edge descending from the node corresponding to one of the possible answer to the case. Okay, तो हर एक एज उस ट्री का पॉसिबल आंसर में से इंक्लूड हो सकता है। So we don't take all the path from the tree. We take the best path. Okay. So how we will choose the path, that is also depends on the entropy and the information. And there is some equation we have to read about. Okay. So this process is a recursive nature and repeated for every substituted in the new nodes. Okay. Let's illustrate this with help of an example. Let's assume you want to play badminton on a particular day, say Saturday. How will you decide whether to play or not? Okay, this is our problem. Let's say you go out and check it is hot or cold. Check the speed of the wind and humidity. How the weather is. That is it sunny, cloudy, or rainy? You take all these factors into account to decide if you want to play or not. So you calculate all these factors for the last 10 days and form a lookup table like the one below. So यहाँ पे एक lookup table दिया हुआ है. From this table, you may use table to decide whether to play or not. तो यहाँ पे 10 days का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो लास्ट कॉलम जो मेरा प्रेडिक्शन लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं या क्लासिफिकेशन लेवल बोलते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या दिया है कि आज प्ले होगा कि नहीं। तो फॉर सम डे वेदर द प्ले विल ऑकर और नॉट। तो सम वैल्यूज आर नो, सम वैल्यूज आर यस। तो ये जो नो और यस वैल्यू हम लोग को मिला है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो यहाँ पे जो फीचर है we have 4 features. One is weather, then another is temperature, another is humidity, another is wind. तो ये 4 फीचर के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे क्लास लेवल डिसाइड हो रहा है whether it is no or otherwise it is yes. This is, we can see, this is also a binary classification problem. यहाँ बाइनरी क्लासिफिकेशन किया जा रहा है yes no को वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए। देख सकते हो वेदर सनी होने से, टेम्परेचर हॉट होने से, ह्यूमिडिटी हाई होने से और विंड वीक होने से हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि ये नहीं हो रहा है। सो व्हिच एट्रीब्यूट इज मच इम्पोर्टेंट, कौन सा एट्रीब्यूट मच इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट का स्पेसिफिक वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या कुछ डिसाइड हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं किसको पहले उठाएंगे फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द टारगेट। ठीक है, अगर मैं सनी वेदर को उठाती हूँ तो वेदर का वैल्यू सनी होने से यहाँ पे नो है और कहाँ सनी है, यहाँ पे सनी होने से यहाँ पे यस है। तो सिर्फ सनी को मैं उठाऊंगी तो प्ले कहीं पे नो हो रहा है, कहीं पे यस हो रहा है। सो वेदर का सनी होने से यहाँ पे प्ले में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, राइट।
ज्यादा इम्पैक्ट ये नहीं दे रहा है। सो किसको मैं पहले उठाऊं? तो आप देख सकते हो टेम्परेचर, टेम्परेचर हॉट होने से भी यहाँ पे नो हो रहा है, एक बार हॉट होने से यहाँ पे यस हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो, मतलब हर एक attribute itself is not sufficient for the prediction, है ना? जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी दो जगह हाई है, लेकिन यहाँ पे नो भी है, यहाँ पे यस भी है। For the day it is weak, but there is no here and yes here. So individual attributes are not sufficient to do the prediction. So we have to consider the multiple attributes. Okay. तो हम लोग एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसका पेयर ले लूं, वेदर और विंड का पेयर ले लूं, वेदर सनी और विंड वीक होने से प्ले हो रहा है आपका नो, वेदर सनी और विंड स्ट्रांग होने से प्ले आपका हो रहा है यस। both this attribute we can predict to some extent correctly. तो सानी स्ट्रॉन्ग अगर और कहीं ये एंट्री हुआ है सानी स्ट्रॉन्ग, अच्छा सिर्फ सानी स्ट्रॉन्ग लेके अगर हम लोग देखेंगे वेदर सानी है लेकिन विंड स्ट्रॉन्ग है, still there is no. So three attributes are not sufficient to do the prediction. So here two attributes are not sufficient. So we have to include another attribute कि ये सानी होगा फिर स्ट्रॉन्ग होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमिडिटी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करने के बाद देयर इज सम रेस्ट्रिक्टेड डिपेंडेंसीज। तो सानी फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पे हाई होने से अगर नो हो रहा है तो सानी स्ट्रॉन्ग नॉर्मल होने से क्या, या सानी स्ट्रॉन्ग नॉर्मल होने से या कोई वैल्यू दे रहा है क्या? सानी यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आपका नॉर्मल दे रहा है, तो यहाँ पे यस हो रहा है। सो टू सम एक्सटेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री features or three attributes are giving us to some better accuracy. तो थोड़ा अच्छा accuracy ये दे सकता है। So ऐसे करके हम लोगों को combine करके देखना है which one is better for our prediction and what will be our combination. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, you may use the table. ये जो मैं कॉम्बिनेशन देखूंगी देयर में भी लॉट मोर कॉम्बिनेशन, राइट? तो किसको पहले लेना है, किसका पहले प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में प्रायोरिटी देना है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग को लेना है वो हम लोगों को कैसे देख सकते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं जो इंफॉर्मेशन गेन करके कैलकुलेशन है वो, राइट? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So now you may use the table to decide whether to play or not. But what if the weather pattern on the Saturday does not match with any row of the table? तो ये भी एक बात है कि जिस दिन के लिए आप डिसाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे 10 एंट्रीज है, 10 डेज का एंट्रीज है, but it may happen that for the prediction whatever you required, suppose you are come up with some feature value which are not matching exactly with any of the row of the given table, then how will take the decision? Okay, so this may be a problem. A decision tree would be a great way to represent the data like this, because it takes into account all possible paths. It will take account all possible paths. So all possible condition it will take account, and to lead it can lead to the final decision. Because suppose you have considered one day and all the four attributes are same with some of the entries or any one of the entries of this table, then it is very easy to do the prediction. But it may happen that in this four attributes, suppose it is not matching with any of the entries of this table, then how to take the decision? Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है, आप देखो decision tree, how the decision tree is made. They have to take this weather attribute को pick किया है. So weather may be, for weather there are three values. It may be sunny, it may be cloudy, or it may be rainy. तो जब weather cloudy हो रहा है, आप देख सकते हो it is giving you the yes value. चेक करते हैं weather का cloudy होने से क्या ये yes हम लोग को दे रहा है. So let's check. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेदर क्लाउडी है, यहाँ पे आपको यस वैल्यू मिल रहा है. सो यहाँ पे भी क्लाउडी है, यहाँ पे यस वैल्यू मिल रहा है. यहाँ पे
क्लाउडी है, यहाँ पे भी ये यस वैल्यू आपको दे रहा है। तो फॉर ऑल द क्लाउडी weather it's giving you that yes, लेकिन सानी होने से क्या हो रहा है, सानी होने से यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। क्लाउडी इट इज डिफरेंट, and for rainy and sunny there is some problem. For some rainy it is no, and for some rainy it is yes. So recently that's why they are making in this way. So if it is sunny, then not only the sunny, but after being the sunny weather, we have to choose another attribute for further prediction. Weather is sunny, it is taking this humidity value. तो ह्यूमिडिटी वैल्यू के लिए यहाँ पे बोल रहा है if weather is sunny and humidity is high, then the game is not played. And if weather is sunny and humidity is normal, then game is played. Let's check. If weather is sunny and humidity is high, then play is no. But if weather is sunny and humidity is normal, then game is played. ऐसे करके यहाँ पर डेफिनेट कुछ क्लासिफिकेशन हम लोगों को मिल रहा है. So we can predict perfectly that if weather is sunny and humidity is high, game is not played. Otherwise, for normal humidity and weather sunny, game is played. अच्छा, यहाँ पे वेदर अगर रेनी होता है और विंड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, then for rainy weather and if wind is strong, then there is no play. Otherwise, if weather is rainy and wind is weak, there is play. So in this way, for this cloudy weather, it is very easy to predict the class that is yes, based on the one attribute, that is weather. But not only here, there are so many yes values. That means if weather cloudy होने से तो गेम प्ले होगा ही. अदरवाइज वेदर अगर सनी भी होता है लेकिन ह्यूमिडिटी नॉर्मल होता है, तब भी गेम प्ले हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग डिसीजन मेक कर रहे हैं, इसमें हम लोग को दो एट्रीब्यूट का हेल्प लेना पड़ रहा है, ह्यूमिडिटी एंड वेदर. लेकिन यहाँ पे तो प्रेडिक्शन हो रहा है, इसलिए एक एट्रीब्यूट वैल्यू भी काफी है. So in this way, we have to choose the attribute for the prediction based on the given attribute value and the class level in the training set. Okay. So यहाँ illustration किया है, illustrated land decision से we can see that each node represents an attribute or feature, and the branch from each node represents the outcome of that node. Finally, it is the leaves of the tree where the final decision is made. If features are continuous, feature अगर continuous होता है, then final decisions could be made. If features are continuous, internal nodes can test the value of a feature against their threshold. तो यहाँ पे features continuous का मतलब क्या हुआ है, तो actually यहाँ पे बोल रहा है यही regression problem है आपका. feature continuous होने से, जैसे weight और height का value जैसे हम लोग ले रहे थे, या height and age, suppose our given attributes, and suppose our prediction value या जिसको हम लोग predict करना चाहते हैं, वो अगर आपका value होता है weight का, तो हाइट और एज हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, तो आपको कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा. सपोज जैसे आपको बोलना पड़ेगा इफ द हाइट इज मोर देन 5 feet and suppose age is more than 40, then respective weight could be suppose 65 to 75 kgs. ठीक है, तो ये आपका रेंज हो गया. तो ये हम लोग कैसे ये डिसाइड कर रहे हैं, तो वी आर फिक्सिंग सम, क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू. थ्रेशोल्ड वैल्यू में क्या क्या आ रहा है, दैट इज वेट इज height is more than 5 and your what can I say, age is more than 40, then there are some predictions. So we are settling here some conjoint